The craze for giving the IELTS, the International English Language Testing System exam, is growing in Punjab. And right now, I am in Kartarpur, which is a small town nearing the Jalandhar city, where I am in a IELTS classroom where students are studying. So we'll check with them. Just to let you know that Kartarpur, which falls in Jalandhar, is a part of the Doaba region, which is also known as the NRI belt of Punjab and education hub of Punjab. So a lot of people that you're looking at here today are very well-read people, and we'll ask them why are they giving this exam and why do they want to leave Punjab. So ma'am, what's your name? Taranjit Kaur. So Taranjit, why are you giving this exam? Because I want to pursue my higher study in abroad, and there are a lot of best opportunities over there as compared to my country, So what country do you have in your mind? Canada. Canada. So, what do you think about opportunities in Punjab? Like, is it a factor that is influencing your decision to go abroad? Yes, I want to be best opportunities related to my education, so I want to go abroad for job opportunities rather than my. So, why can't you work in Punjab? What is causing you to move from Punjab? Because there are not more best opportunities as compared to the abroad. So this is What have you studied in Punjab? commerce. I'm commerce student. You're a commerce student. So, there are fewer commerce opportunities in Punjab? Yes, according to my knowledge, there are fewer opportunities related to commerce. And what do you think when you reach Canada? What would your life would look like? Firstly, I want to pursue my study, which is related to commerce, and then I want to run business after my education. And do you think that you would come back to Punjab after that? Yes. You want to come back? Yes, if I settle in my life and I become successful businessman, so I definitely come back to my Punjab. And yes. Why are you willing to leave Punjab right? Because I want to go abroad for my higher study. So Higher that's why studies. I want to go in Canada. So what would it take for the government here that they can retain you in Punjab? Like, what should the government do to woo young people in Punjab back? According to me, government should provide jobs, opportunity for youngers, Hmm. and more opportunities. Well-paying opportunities? Yes. What's the start? Also, what have you studied in Punjab? Mm, आपने मतलब पंजाब में क्या पढ़ा है अभी तक मतलब ग्रेजुएशन arts. आर्ट्स में सो यू व्हाट इज द prospect of your art studies in Punjab versus in Canada, whatever you study? According to me, there are lots of opportunity about jobs and education in Canada. So that's why. Do you know someone? Do you have links in Canada? Do you have friends in Canada? Yes, I have. In cities like Jalandhar and even Kartarpur, it's hard to escape massive hoardings emblazoned with the advertisements for IELTS coaching or shiny buildings tempting students with the flags of Canada, Australia, the United Kingdom, and the United States. Between 2016 and February 2021, about 9.84 lakh people moved to other countries from Punjab and Chandigarh, which includes 3.79 lakh students and over 6 lakh workers, according to a Lok Sabha reply from V. Muralidharan, Minister of State at the Ministry of External Affairs. These numbers, when compared with the 2020 population projection for Punjab and Chandigarh, show every 1 in 33 Punjabis have moved abroad in the last 5 or 6 years. While a greater percentage, 6% of Kerala's population has moved abroad in the same time period, what sets Punjab apart is the number of students going abroad to pursue an education and then settle down there. In Punjab, nearly 38% of the immigration was on student visas, while in Kerala, this category was just 5% of the immigration from the state. There is another difference. Much of Kerala's migration is directed towards the Middle East or Gulf countries, which do not grant permanent residence or citizenship. In many cases, therefore, the immigration is temporary and families stay back home. In Punjab, however, there are reports of entire villages going empty and people selling off their lands, suggesting that those who leave do not intend to return. At Maths Institute of English Language in Kartarpur, just about every student wants to settle down in Canada.
Many of the pupils here live in the nearby villages and struggle with English but seem confident and hopeful about their prospects abroad. Samohit, another 18-year-old student of IELTS, does not see any bright future in Punjab. Have you studied in Punjab? Well, I'm from commerce stream. Hmm. I recently completed my senior secondary education, Hmm. and now I want to pursue my study in abroad. So that's why I took language classes. So why do you want to study abroad? What's the condition of institutions in India? What do you feel? Well, in India, according to my perception, there are lots of competition between the graduated persons or students because the opportunities are less as compared to the graduated persons or students. So that's why I want to go abroad. They provide best opportunities to their students as well as they provide PR facility to international students. So that's why I want to. So what would it take the Punjab government to make you stay back? Well, the government of India is full of corruption. So I don't think there are any improvement can be seen in future in the government institutions. So does this corruption or whatever reasons you have to go abroad, does it make you angry sometimes that you have to leave your country for a better life? Does it make you feel angry? Yes, sometimes because it is lots of I face lots of struggle. So when I go to abroad, I also leave my parents. So that's why sometimes I feel angry or I feel very guilty. But it's my no, I want to go abroad. So that's why I want to set my career in abroad. You don't feel your career will be settled in Punjab? Yes, definitely no. There is no shadow of chance of future in Punjab, so that's why I want to go. Samohit is also aware of the fact that as a student he might have to work to fend for himself, but he is happy to do so because a dollar is more valuable to him. You will be having some job that you can't do in India. What are the jobs that you have in mind that you will do as a student? Well, when I go to Canada, I prefer to do like a manager in hotels or cafes. As a part-time student, as a right? part-time students, but I also interested in cooking. So when I go to Canada, I will choose course related to the cooking or hotel operation management. So I think in India there are lots of there is nothing or less number of opportunities related to the cooking or hotel operation management. And how well do they pay in India and versus Canada? Do you have an idea in mind? Pardon? How well do they pay in Canada or how much do they pay in India? Do you have this thing in mind? Yes, for a cooking skill? Yes, definitely. In Canada, they pay their pay rate is higher as compared to the India. Also, their pound rate is 60 and the Indian currency is low rate. So that's why I want to go to abroad for my profession. Or I also have interest in cooking in hotel operation management. So that's why I want to go to abroad. However, apart from the paucity of opportunities, students in Punjab seem to be victims of another lack, that is quality of education. According to Monica Dhingra, the administrative director of the coaching institute, most students have a very weak foundational knowledge of English. Children from humble backgrounds, including those who were taught in government schools, are learning the basics of English in IELTS coaching centers. The foundations in school aren't that strong, which makes it difficult to attain a desirable IELTS score. This is what Monica Dhingra told ThePrint, adding the fact that the IELTS business has expanded at least by over 10 times in the last 1 decade. Indeed, figures made public by IELTS of the mean scores of students based on their first language background reveal that Punjabi speakers scored the lowest among the Indian regional languages. The overall average band score of a Punjabi test taker under the academic category was 5.8 for context. This score was 6.7 for Marathi speakers and Kannada speaker it was 6.7. It was 6.6 for Tamil, 6.4 for Hindi, 6.2 for Telugu and Bengali and 6.0 for Gujarati. Most universities abroad require a minimum band score of 6.0. The maximum that one can achieve is 9.0.
There are also indications that the government schools in the state do not provide a very high quality of education. For instance, the annual status of education report for data from 2018 showed that among standard 1 children in government school, only 58% could read letters and 67% could recognize numbers. In contrast, the corresponding figures for standard 1 students in private schools were 83% and 94% respectively. Punjab's performance in Niti Aayog's Sustainable Development Index has also been patchy in the quality education parameter. But according to Ramesh Chandra, former ambassador and retired IFS officer who stays in Jalandhar city, this is not a big deal. जो यंगस्टर्स हैं वो कह रहे हैं हमको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती तो हमको अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो वो ऐसे कह के जाते हैं. तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दैट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? हाँ, ये बहुत ही रेलिवेंट और टॉपिकल क्वेश्चन है. इधर उधर सब जगह ये शोर हो रहा है कि यहाँ माइग्रेशन हो रही है. ये फैक्ट तो है कि माइग्रेशन तो हो रही है और सब लोग जाना ही चाहते हैं. आप जलंधर जैसे शहर में हम बैठे हैं, वहाँ जाकर देखो कि जगह जगह पे IELTS के स्कूल खोले हैं. यहाँ इमिग्रेशन माइग्रेशन कंसल्टेंट बैठे हैं. तो इसका मतलब उनके पास काम है. काम इसलिए है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं, हर जगह जाना चाहते हैं. मगर ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसके कारण क्या हैं, क्यों जाना चाहते हैं, फिर जाके उसका होता क्या है, अच्छे के लिए क्या है तो बुराई के लिए क्या है, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये और बातें आगे सोचने की हैं. तो माइग्रेशन तो है और जाना चाहते हैं. मेरे ख्याल ये रुकने वाला भी नहीं है, ये रहेगा और आज से नहीं है. ये तो मैं तो जो समझता हूँ कि 1950 से ही, जब से ही इंग्लैंड में लोगों ने जाना शुरू किया था, उसके बाद से ही वो थमने का नाम नहीं ले रही. जैसे जहाँ यहाँ भी बेटर एवेन्यूज़ खुलते हैं तो वहीं पंजाबी लोग तो वहाँ पहुँच जाते हैं. मैंने तो अफ्रीका में भी देखे हैं, मैंने लैटिन अमेरिका में भी देखे हैं, मैंने यूरोप में भी देखे हैं, मैंने गल्फ़ में भी देखे हैं. हर जगह ही हैं. जाने की होड़ तो है और होड़ मेरा ख्याल किसी कमजोरी से नहीं है या किसी एक कॉम्प्लेक्स से नहीं है. टू अर्न गुड डिग्निफाइड ब्रेड एंड बटर is the sole criteria, I think. So, what do you think will be the consequence of this mass migration from Punjab? इतने जो youngsters हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं. So, and those countries are taking them inside. So, इतना जो क्रेज़ है, इसका आगे पंजाब के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ेगा. ये मैं भी पढ़ता हूँ कि लोग चले जाएंगे, यहाँ कौन काम करेगा. यहाँ जितना काम है उससे ज़्यादा हमारे पास लेबर फोर्स है. हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, सेमी स्किल्ड मैन पावर है, हाईली क्वालिफाइड मैन पावर है. हर तरह की मैन पावर हमारे पास है. और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम और क्विट होती जाएगी कि यहाँ पे उसकी मैचिंग कैलिबर की उनको नौकरियाँ मिलें. हम क्रिएट करें. क्या हम कर पाते हैं? क्या सारी हमारी इकॉनमी उसको गियर अप है कि जो हमारा जो मैन फोर्स है, जहाँ क्वालिफाइड मैन फोर्स है, उसको ऑब्जॉर्व करने की है? नहीं, मेरा ख्याल तो नहीं है. जब नहीं है तो नेचुरली लोग जाएंगे ही. तो पंजाबी लोग पहले से ही थोड़ा कल्चरली और ट्रेडिशनली उनका रहन सहन, अपब्रिंगिंग और फेथ और सब कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं कि जाओ अपना काम करो, खाओ पियो और डट के काम करो. मेरे ख्याल से कभी रुकने वाला नहीं है. मेरे ख्याल ना भी रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. What happens when the state with limited opportunities let go of its talented youth is that it also impacts those who are studying here but haven't thought about moving abroad yet. There aren't very many jobs and even the government of Punjab is stingy with new recruits, paying them only the basic salary. Lakhwinder Singh, the economist at Punjabi University Patiala's Khalsa College, explains how this affects the youngsters. What has happened is that in the recent past, the government of Punjab has passed a law where you will find that any government employee which is recruited for providing services, that is expected to get only the basic pay for the 3 years period of time, and even that service is not counted in the total length of the service of the employee. So I think that has reduced hugely the wage rate both in the
public sector, and this floor wage rate has gone down in the private sector as well. So therefore the living and working condition in the state of Punjab has not improved as was expected in the post-liberalization period of time. So this is the main reason that the opportunities has shrunk over a period of time. Unemployment is very high because Punjab, compared to other states of India as well as national average, the rate of unemployment in general is very high. But among the educated youths, the rate of unemployment is the highest compared to India. Even students who are pursuing their higher education in Punjab do not believe that they can thrive in the state. Sitting in the lawns of Punjabi University in Patiala, students chit-chat about their classes and their friends, but ask about their future, the mood darkens. So, आपका नाम क्या है? हरजिंदर सिंह। आप किस चीज़ डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, तो आपके हिसाब से पंजाब में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? पहले बताइए, हैं अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा? ज़्यादा तो नहीं है, बट ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ फ्यूचर ਲਈ। तो अभी जैसे आपने अगर मास्टर्स पूरी कर ली है पंजाबी यूनिवर्सिटी से, आपको अगर जॉब करना है, आपको अच्छा कमाना है, आपको अगर अच्छा काम करना है, तो आपको पंजाब में गारंटी, आपको लगता है कि पंजाब में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? हाँ मिल पाएगी, बट बहुत घੱਟ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ? ਐਜ ਅਬਰੋਡ, ਐਜ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਐਜ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਜ ਏ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ जाएगा ਸਾਡਾ। तो जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी पढ़ाई करने के बाद, आपको क्या लगता है, विल इट बी इनफ टू मीट योर नीड्स? एज ए प्रेजेंट अभी एट प्रेजेंट जैसे अगर आप कल को जॉब लेते हो पंजाब में, तो आपको क्या लगता है स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है यहाँ पे? प्रेजेंट तो 15,000 या 20,000 है, बट आफ्टर अ मास्टर्स डिग्री। हाँ। और बाहर पंजाब से बाहर अगर किसी और स्टेट में जाएंगे, अगर और स्टेट में जैसे दिल्ली या नोएडा के हम देखते हैं तो वहाँ पे 25 या 30,000 से स्टार्टिंग होती है। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਜਾਂ 18,000 तक। तो आपको कभी बुरा लगता है कि यार मेरे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अच्छी, सैलरी नहीं अच्छी? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है? लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन किया है ना? कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने? चितकारा यूनिवर्सिटी। तो जब आपने चितकारा यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की, तो आपको पंजाब में जॉब मिली? नहीं, मेरी पहले इंटर्नशिप लगी थी नोएडा। अच्छा। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने अच्छी कंपनीज़ में ट्राई किया, तो लकीली मेरे को बॉम्बे जॉब मिली थी। अपने पंजाब में एनिमेशन तब कोर्स नया आया था। एक्चुअली हमारा फर्स्ट बैच था चितकारा यूनिवर्सिटी में भी। तो चंडीगढ़ मोहाली में थी जॉब्स, लेकिन वो इतनी रेपुटेटेड कंपनीज़ नहीं थी। वो जस्ट ई लर्निंग जैसे बच्चों के पढ़ाने की जो राइम्स होती हैं उस पर काम करती थी, तो मेरे को उधर नहीं करना था काम। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका कितना % चांस रहता है कि उनको पंजाब में अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिस पे वो काम करें? मतलब 80% तो बाहर ही होते हैं। वो पंजाब में काम नहीं करते? वो में नहीं, इतना पे स्केल अच्छा नहीं होता पंजाब में। तो आपने कहाँ काम किया है आफ्टर योर स्टडीज़? मैंने नोएडा किया है, उसके बाद बॉम्बे किया है। तो पंजाब और बॉम्बे में आप कितना फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है, काम में भी बहुत फ़र्क है, पे स्केल में फ़र्क है, एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। तो आपको कैसा फील होता है जब आपको लगता है कि यार मेरे को वही बॉम्बे वाली सैलरी काश पंजाब में भी मिल जाती है? आपको थोड़ा ऐसा कि मतलब अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है पंजाब भी। जैसे अभी चंडीगढ़ मोहाली में बहुत सी कंपनीज़ आ गई हैं एनिमेशन की, अच्छी कंपनीज़ आ गई हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पर क्या वो बॉम्बे लेवल की सैलरी आपको ऑफ़र करेंगे? आज नहीं, लेकिन कल तो कर सकती हैं। धीरे धीरे सब हो जाएगा सही। तो विल यू बी विलिंग टू वर्क इन पंजाब इफ प्राइवेट सेक्टर ओपन्स मोर? Yes, you will be willing. yes. Women in Punjab have it even tougher since they are often denied the freedom to move to other parts of India, explained Manpreet Kaur. Woman, being as a woman, आपको क्या लगता है कि पंजाब से बाहर पेरेंट्स भेजते हैं
आगे जॉब करने के लिए, करियर ग्रोथ करने के लिए? इनमें ना मतलब हम कह सकते हैं कि फैमिली में डिपेंड होता है। अच्छा। फैमिली है सानू बाहर भेज रही है, कुछ कुड़ियां नू फैमिली घरों बाहर नहीं जान दिंदी, कुछ दी फैमिली घरों बाहर भेज दिंदी है। डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਰ। ਤੇ ਜਿਨ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੌਬਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾलन पोषण चल पैंदा। तो आप जब यहाँ से ग्रेजुएट मास्टर्स करके निकलेंगी, आपको लगता है आपको पंजाब से बाहर जाना पड़ेगा अच्छी जॉब करने के लिए? हाँ जाना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ। 15 ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੀਜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। से आपके पेरेंट्स आपको लगा रहेंगे, बट बाकी सब लड़कियों को का ये फैक्टर दिमाग में लगाना पड़ता है कि मेरे को पंजाब जाने से पहले मतलब पेरेंट्स का सोचना पड़ेगा, घर का सोचना पड़ेगा? ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਦ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। The concerns of students are in line with the findings of a survey conducted last year by the Center for Studying Developing Societies (CSDS), which found that 78% of the respondents in Punjab felt the state had bad jobs compared to the national average of 41%. The exodus of youths from Punjab has entered the state's political discourse ahead of polls. But surprisingly, there seems to be very little will to retain young blood. Instead, most political parties are promising to offer benefits that will facilitate the exit of students. The Shiromani Akali Dal, for instance, promised last year that if it came to power, it would issue student education cards with interest-free loans for rupees 10 lakh for not just college fees, which will also include IELTS coaching. The Aam Aadmi Party, however, has taken a different approach. Bhagwant Mann, the party's president in the Punjab last month, said that the AAP's agenda included stopping the migration of money and talent by creating more job opportunities in the state. According to Paramjit Singh, who teaches political economy at Punjab University, mass migration from the state could cause grave problems for it and increase the gaps between rich and the poor. It takes money to move abroad, he said, so those who have the resources are able to do it. Mostly it's the upper middle class which can afford. Some of them are selling their lands, which will only go in the hands of the rich people. What it might do in the long run is that it will empty the middle class in Punjab and the gaps between the rich and the poor might just widen, he told ThePrint. Well, those who go abroad but become occasional visitors also influence the psyche of those who could not, which is natural according to the retired IFS officer Ramesh Chandler. But what about people जो पंजाब से बाहर नहीं जा पाते या नहीं जा पाएंगे because of their reasons? तो उनके अंदर एक feeling of left behind आता है कि यार हम नहीं जा पाए, हमारे friends चले गए, उसका कुछ असर पड़ेगा पंजाब पे? हाँ हाँ, वो ये तो हर सोसाइटी में है कि मेरा भाई अच्छा हो गया, मैं पीछे रह गया, जहाँ वो अच्छा कैसे हो गया तो मैं भी हो जाऊँ। ये तो एक मेरे ख्याल नेचुरल टेंडेंसी है, इसमें कोई घबराने की क्या बात है। जो लोग जब बाहर जाके भाई अच्छा कमा रहा हो, अच्छा खा रहा हो, अच्छा पी रहा हो, और जो नहीं जा पाया तो वो आके देखेगा, वो अपना घर अच्छा बना लेगा, अपनी गाड़ी अच्छी रख लेगा, आके यहाँ 2-4 महीने रहेगा तो सबको अच्छे से रहेगा, तो नेचुरली जेलसी तो होगी, या एनवियस होगा, जो कुछ भी होगा। ये मगर ये इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि देखने से लगता है कि यार मैं भी अच्छा हो जाऊँ, मैं भी बाहर चले जाऊँ, मैं भी 4 पैसे जाके कमा के लाऊँ। मेरे ख्याल इसमें क्या खराबी है? मेरे ख्याल तो कोई खराबी नहीं है। When ThePrint asked students if they would ever come back, a few said that they might want to invest in Punjab after becoming successful, but others did not say much. But they have clearly said if the government provides them well-paying opportunities here, they might consider staying back.